1. Monarchy. बादशाहत, शहंशाहियत. A form of government with a monarch at the head. Synonyms: kingship, sovereignty, autocracy, monocracy, absolutism. 2. Conscience, noun. अत, ईमान, नियत, ज़मीर. A person's moral sense of right and wrong, viewed as acting as a guide to one's behavior. Synonyms: sense of right and wrong, sense of right, moral sense, still small voice, inner voice, voice within. 3. Ostensibly, adverb. बादी अल-नज़र में, बज़ाहिर, ज़ाहिरना. As appears or is stated to be true, though not necessarily so, apparently. Synonyms: apparently, seemingly, on the face of it, to all appearances, on the surface, to all intents and purposes. 4. Nuisance, noun. कानून के मुताबिक मुज़िर नुकसानदेह. A person or thing causing inconvenience or annoyance. Synonyms: source of annoyance/irritation, annoyance, inconvenience. 5. Paranoid, adjective. वसवसा नफसी, एक ज़हनी बिगाड़, अजनबी. Characterized by or suffering from the mental condition of paranoia. Synonyms: irrationally anxious, over-suspicious. 6. Faction, noun. साजिशी गिरोह, धड़ा, फिरका. A small organized dissenting group within a larger one, especially in politics. Synonyms: clique, coterie, caucus. It has become de rigueur these days for many commentators to speak alarmingly about the pitfalls of political dynasties. The dynasties they particularly disapprove of are the Sharif and the Bhutto families. Yet it is ironic that even as they oppose dynasties, they are happy to support a monarchy, even knowing that it is monarchies that give rise to dynasties. If some parties are called dynasties, then consistency demands that parties where no leaders are given any importance except the supreme leader, and where other party leaders who have tried like Icarus to fly too close to the sun have seen their wings melt away, should be called monarchies. After all, there is no qualitative difference between arguing that only one family is capable of ruling and only one man is capable of ruling forever. Neither is there any difference between one family or one man having a chokehold on a political party. Unfortunately, it is these dictatorial chokeholds that produce disastrous decisions, especially in the appointment of unsuitable people to important positions. Political dynasties are of course not unique to Pakistan. The Nehru/Gandhi family in India, the Mujib family in Bangladesh, the Bandaranaike and Rajapaksa families in Sri Lanka, the Aquino and Marcos families in the Philippines are examples. When our constitution gives so much power to party leaders, what power can legislators have? But in Pakistan the power of party leaders is sui generis in its totality and renders all parties, save the Jamaat-e-Islami, dynastic parties, whether run by a ruling family or a supreme leader. Our constitution, institutions and politics all play a part in making leaders dictatorial. After changing prime ministers more frequently than summer interns during the first 11 years, we went into 3 successive martial laws that lasted for 30 years until 1988, except for 4 years of Zulfikar Bhutto's constitutional rule, albeit under an emergency that suspended basic rights. The next 11 years saw 2 elected prime ministers trade places 4 times, with 4 caretaker prime ministers put in place each time an elected prime minister was ousted with Rawalpindi's help. This merry-go-round only ended when Gen Musharraf took over. An avenue of instability during those years was Article 58(2)(b), a constitutional provision that allowed presidents, with a wink from the establishment, to remove elected prime ministers. Another was the changing of loyalties of legislators through the influence the establishment could bring to bear on them. To counter them, the National Assembly passed the 14th Amendment in 1997 that deleted 58(2)(b, and also took away powers from legislators to vote according to their own will. Now, rather than their conscience or fear or money, legislators had to vote according to the wishes of their party heads.
After martial law ended, the 18th Amendment again deleted 58(2)(b, which Gen Musharraf had brought back, and also delineated the issues where legislators had to vote according to the desires of their leaders, even if they were elected as independents, unless they were willing to lose their seats. Recently, the Supreme Court has gone a step further, a step perhaps not even envisaged in the Constitution, and said that a legislator's vote against his parliamentary leader's orders can't even be counted. So a journey that began with ostensibly trying to stop the meddling of institutions, but in reality was also meant to free the party leaders from the nuisance of listening to their legislators, has finally rendered Parliament nearly superfluous. No legislator now has any say on who the PM should be, what the budget should be, and what constitutional amendments should be approved. It is only the few party leaders who get to decide. When our Constitution gives so much power to party leaders, what power can legislators have? Why would there not be dynasties or monarchies? Party heads would contend this was done to contain the establishment's influence on legislators. But our living experience tells us that when the establishment wants to interfere, it finds a way. So these amendments haven't reduced the establishment's ability to interfere, just given party heads total power over individual legislators. The way to make parties more democratic is to get rid of laws that restrict a legislator's right to vote. The only caveat being that all votes should be public, as people should know how their representatives voted. Legislators who don't vote for the interest of their constituencies will get defeated. Of course, the power of leaders is also preserved by how politics are conducted in Pakistan. In America, if you know a politician's views on abortion, you can guess his views on immigration. American politics is played out on a left-right ideological spectrum. If politicians are on the left on one issue, they are mostly on the left on all issues. Not so in Pakistan. Here political parties are based not on ideology but reflect the values and interests, and it must be said, the ethnicity of their leader. That's why family is important, as it reflects, in voters' consciousness, the same values and interests. Moreover, the establishment's power has made party leaders more insular, perhaps even paranoid, and that's why they don't let anyone but family come to the top. An example comes from KP, where Ghaffar Khan's Khudai-Khidmatgar vote bank was inherited by his son Wali Khan, who went on to become head of his faction of the National Awami Party. Maulana Bashani headed the other. When Wali Khan was jailed, Begum Naseem Wali ran the party. Eventually, his son Asfandyar Wali took over the party. Even though ANP is replete with leaders who have sacrificed their family members' lives for this country, the next leader will be Asfandyar's son Imal Wali. This tells us that the vote belongs to the leader, is jealously guarded, and is passed down families. Parties are merely vehicles leaders use to institutionalize their popularity. It's possible, though unlikely, to have a successful non-dynastic, both non-monarchical and non-family, party in our part of the world. An example is the Bharatiya Janata Party, which had Atal Bihari Vajpayee and now has Narendra Modi as its leader. But BJP's identification with Hindutva politics makes it possible for it to rely on ideology as opposed to a ruling supreme leader or family for success. Thus, perhaps for a non-dynastic party to be successful, an ideological base is necessary. Whether such parties will arise in Pakistan remains to be seen. The writer is a former finance minister. Published in Dawn, March 1, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. इन दिनों बहुत से मुबस्सरीन के लिए सियासी खानदानों के नुकसानात के बारे में खतरनाक अंदाज में बात करना मुश्किल हो गया है। वो जिन खानदानों को खास तौर पर नापसंद करते हैं वो शरीफ और भुट्टो खानदान हैं। फिर भी ये सितम ज़रीफ़ी है कि अगरचे वो खानदानों की मुखालफत करते हैं, लेकिन वो बादशाहत की हिमायत करने में खुश हैं, यहाँ तक कि ये जानते हुए भी कि ये बादशाहत ही है जो खानदानों को जन्म देती है।
अगर कुछ पार्टियों को खानदानी कहा जाता है तो मुस्तकिल मिजाजी का तकाजा है कि ऐसी पार्टियां जहां सुप्रीम लीडर के अलावा किसी रहनुमा को कोई अहमियत नहीं दी जाती और जहां पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने सूरज के बहुत करीब परवाज करने की कोशिश की हो और जिन पार्टियों ने सूरज के बहुत करीब परवाज करते हुए देखा हो उन्हें बादशाहत कहा जाए। बहरहाल ये दलील देने में कोई मियारी फर्क नहीं है कि सिर्फ एक खानदान हुक्मरानी करने की सलाहियत रखता है और सिर्फ एक आदमी हमेशा के लिए हुकूमत करने की सलाहियत रखता है। न ही एक खानदान या एक शख्स के दरमियान कोई फर्क है जो किसी सियासी जमात पर गिरफ्त रखता है। बदकिस्मती से ये आमिराना हथकंडे ही तबाहकुन फैसले करते हैं, खास तौर पर अहम ओहदों पर नामुनासिब लोगों की तकर्री में। सियासी खानदान यकीनन पाकिस्तान के लिए मुनफरिद नहीं है। हिंदुस्तान में नेहरू/गांधी खानदान, बांग्लादेश में मुजीब खानदान, श्रीलंका में बिंद्रा नायके और राजापिस्का खानदान, फिलिपाइन में इक्कीनो और मार्कोस खानदान इसकी मिसालें हैं। जब हमारा आइन पार्टी लीडरों को इतनी ताकत देता है तो कानून साजों के पास क्या इख्तियार हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान में जमाती रहनुमाओं की ताकत मजमूई तौर पर बहुत कम है और जमात इस्लामी के अलावा तमाम जमातों को मौरूसी जमातों में तब्दील कर देती है, चाहे वो हुक्मरान खानदान के ज़ेर इंतज़ाम हों या सुप्रीम लीडर। हमारे आइन, इदारे और सियासत सब रहनुमाओं को आमिराना बनाने में किरदार अदा करते हैं। पहले 11 सालों के दौरान मौसम गर्मा के इंटर्न के मुकाबले में वज़ीर आज़म को ज़्यादा बार तब्दील करने के बाद हम मुसलसल 3 मार्शल में चले गए जो 1988 तक 30 साल तक जारी रहे, सिवाय ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की आइनी हुक्मरानी के 4 साल के, हालांकि एक इमरजेंसी के तहत जिसने बुनियादी हुकूक को मुअत्तल कर दिया था। अगले 11 सालों में 2 मुंतखब वज़राए आज़म ने 4 मरतबा तिजारत की। हर बार रावलपिंडी की मदद से किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को बरतरफ किया गया तो 4 निगरान वज़ीर आज़म बनाए गए। जनरल मुशर्रफ के इक़्तिदार संभालने के बाद ही ये खुशी ख़त्म हो गई। इन बरसों के दौरान अदम इस्तेहकाम का एक ज़रिया आर्टिकल 58(2)(b था, एक आइनी शिक जिसने सुदूर स्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक आंख के साथ को मुंतखब वज़राए आज़म को हटाने की इजाज़त दी। दूसरा ये कि कानून साजों की वफादारियों को स्टेब्लिशमेंट के असर और रसूख के ज़रिए तब्दील किया गया। उनका मुकाबला करने के लिए कौमी असम्बली ने 1997 में 14 तरमीम मंजूर की जिसने 58(2)(b को हस्फ कर दिया और कानून साजों से अपनी मर्जी के मुताबिक वोट देने का इख्तियार भी छीन लिया। अब कानून साजों को अपने ज़मीरा खौफ और पैसे के बजाय अपनी पार्टी के सरबराहों की मर्जी के मुताबिक वोट देना पड़ता था। माशाल्लाह के खात्मे के बाद 18 तरमीम ने जनरल मुशर्रफ की जानिब से वापस लाए गए 58(2)(b को एक बार फिर हस्फ कर दिया और इन मसाइल की भी निशानदेही की जहां कानून साजों को अपने रहनुमाओं की ख्वाहिशात के मुताबिक वोट देना पड़ता था, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब ही क्यों ना हों, बशर्ते कि वो अपनी नशिस्तें खोने के लिए तैयार ना हों। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़ाया है, एक ऐसा कदम जिसका शायद आइन में तसव्वुर भी नहीं किया गया था, और कहा है कि एक रुकन असेंबली के अपने पार्लिमानी लीडर के अहकामात के खिलाफ वोट ओहे की गिनती भी नहीं की जा सकती है। लिहाजा एक ऐसा सफ़र जो बज़ाहिर इदारों की मुदाखलत को रोकने की कोशिश से शुरू हुआ था, लेकिन दर हकीकत इसका मकसद पार्टी रहनुमाओं को उनके कानून साजों की बात सुनने की परेशानी से निजात दिलाना भी था, आखिरकार पार्लियामेंट को तकरीबन गैर ज़रूरी बना दिया है। अब किसी भी कानून साज के पास इस बारे में कुछ नहीं है कि वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए, बजट क्या होना चाहिए और कौन सी आइनी तरामीम मंजूर की जानी चाहिए। ये सिर्फ चंद पार्टी रहनुमा हैं जो फैसला करते हैं। जब हमारा आइन पार्टी लीडरों को इतनी ताकत देता है तो कानून साजों के पास क्या इख्तियार हो सकता है। खानदान अब बादशाहत क्यों नहीं होगी। पार्टी सरबराहान का कहना था कि ऐसा कानून साजों पर स्टेब्लिशमेंट के असर और रसूख को रोकने के लिए किया गया था, लेकिन हमारा जिंदा तजर्बा हमें बताता है कि जब स्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करना चाहती है तो उसे एक रास्ता मिल जाता है। लिहाजा इन तरामीम ने स्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत की सलाहियत को कम नहीं किया है, सिर्फ पार्टी सरबराहों को इनफरादी कानून साजों पर मुकम्मल इख्तियार दिया है। पार्टियों को ज़्यादा जमहूरी बनाने का तरीका यह है कि उन कवानीन से छुटकारा हासिल किया जाए जो कानून साज के वोट देने के हक को महदूद करते हैं। वाहिद इंतबा यह है कि तमाम वोट अवामी होने चाहिए, क्योंकि लोगों को मालूम होना चाहिए कि उनके नुमाइंदों ने किस तरह वोट दिया।
जो कानून साज अपने हलकों के मुफाद में वोट नहीं देंगे वो हार जाएंगे। यकीनन पाकिस्तान में सियासत किस तरह की जाती है, इससे भी रहनुमाओं की ताकत महफूज रहती है। अमेरिका में अगर आप इस्कात हमल के बारे में किसी सियासतदान के ख्यालात को जानते हैं तो आप इमिग्रेशन के बारे में इसके ख्यालात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अमेरिकी सियासत बाएं बाजू और दाएं बाजू के नज़रियाती पस मंज़र पर खेली जाती है। अगर सियासतदान किसी एक मसले पर बाईं तरफ हैं तो वो तमाम मामलात पर ज़्यादातर बाईं तरफ हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। यहाँ सियासी जमातें नज़रिए पर मबनी नहीं हैं बल्कि अक़दार और मुफादात की अक्कासी करती हैं, और ये कहना ज़रूरी है उनके रहनुमा की नस्ल। यही वजह है कि ख़ानदान अहम है, क्योंकि ये राय दहिंदगान के शऊर में उन्हीं अक़दार और मुफादात की अक्कासी करता है। मज़ीद बरा एस्टेब्लिशमेंट की ताकत ने पार्टी रहनुमाओं को ज़्यादा अलग थलग बना दिया है, शायद पागल भी, और यही वजह है कि वो ख़ानदान के अलावा किसी को भी ऊपर नहीं आने देते। इसकी एक मिसाल के पीछे मिलती है, जहां गफ्फार खान का खुदाई खिदमतगार वोट बैंक उनके बेटे वली खान को विरासत में मिला, जो बाद में नेशनल अवामी पार्टी के अपने धड़े का सरबरा बन गया। मौलाना भाषानी दूसरे धड़े के सरबरा थे। जब वली खान को जेल भेजा गया तो बेगम नसीम वली ने पार्टी चलाई। आखिरकार उनके बेटे असफंदियार वली ने पार्टी की कमान संभाल ली। अगरचे ANP ऐसे रहनुमाओं से भरी पड़ी है जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपने खानदान के अफराद की जानों का नजराना पेश किया है, लेकिन अगला रहनुमा असफंदियार के बेटे एमर वली होंगे। ये हमें बताता है कि वोट लीडर का होता है, हसद से इसकी हिफाजत की जाती है और इसे खानदानों में मुंतकिल किया जाता है। पार्टियां महज वो गाड़ियां हैं जो रहनुमा अपनी मकबूलियत को इदारा जाती बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मुमकिन है, अगरचे इसका इम्कान नहीं है, दुनिया के हमारे हिस्से में एक कामयाब गैर खानदानी पार्टी गैर बादशाही और गैर खानदानी दोनों पार्टी हो। इसकी एक मिसाल भारतीय जनता पार्टी है, जिसके पास अटल बिहारी वाजपेयी थे और अब नरेंद्र मोदी इसके लीडर हैं। लेकिन हिंदुत्व की सियासत के साथ बीजेपी की शनाख्त ने इसे कामयाबी के लिए हुक्मरान सुप्रीम लीडर खानदान के बजाय नजरिए पर भरोसा करना मुमकिन बना दिया है। लिहाजा शायद एक गैर खानदानी जमात के कामयाब होने के लिए एक नजरियाती बुनियाद जरूरी है। ये देखना बाकी है कि पाकिस्तान में ऐसी जमातें पैदा होंगी या नहीं। मजमून निगार साबिक वजीर खजाना है। अखज़ शदा बतारीख 1 मार्च 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.